wali tarika to your brother and sister within the Jamaat. Because today we are not going out. We are not giving dawat. Can you explain our tarika to your children, to your brother and sister, to your family, to your friend, to your Jamaat? Imam wants us to be like Dai. He did not give you a title of Dai to make you happy. He gave you the title of the Dai so you may pay attention and learn the knowledge, the true knowledge. So you may tomorrow represent as a Dai represented Imam of their time. And you will be able to learn, understand, and explain to your children, to your brother and sister, to your Jamaat. Then, inshallah, maybe if someone asks us from outside, we can explain to them too. But right now, the dawat is not open. We are not converting. We are not trying to convert anyone. But at least we should be able to explain to our family. That is the Imam's Farman. So this was the 5th rank, Da'i Mutallaq, like our Da'is of the past. Then comes the level of 6th level of Hujjat. Hujjat हम पीर को कहते हैं, पीर को हम हुज्जत कहते हैं, जो हमारे दाइयों ने टर्म यूज किया पीरों के लिए। इसके बाद हुज्जत आजम, उसके बाद इमाम, उसके बाद असाज, उसके बाद नातिक, उसके बाद नफ्स कुल, उसके बाद अक्ल कुल। ये 12 दर्जात हैं जिसकी मौला ने यहाँ पर फरमान में हमको बताया कि जो इल्म वाली रूह होगी वो दर्जा बदर्जा ऊपर जाएंगी। और फिर दूसरे फरमान में फरमाया कि आप पीर सदरुद्दीन जैसे हो सकते हैं, आप हज़रत ईसा जैसे हो सकते हैं, आप फरिश्तों जैसे हो सकते हैं। ये दर्जात की बात कर रहे हैं मौला बाबा। So you will end our first question and first session of importance of ilm in understanding our tariqah, part 4. Now, of course, we have some question which we were not able to cover previous week. If you remember that we had some technical difficulties. So यहाँ पर एक फरमान को हम पढ़ रहे थे when my computer had gone out and I was not able to read further into this फरमान. We had covered the first part of this फरमान. तो हमारी बहन पूछती है कि इंसान रात दिन दौलत कमाए, नेक काम करे और फिर मर जाए, उसमें क्या फायदा? इसी तरह हमेशा बंदगी करने के बाद आजादी तक ना पहुंचे तो क्या फायदा? अक्लमंद कम पर खुश ना होगा. Let me translate that in English as much as possible. Our sister had asked this two-parted question from this one farman. We had covered the first part. You can listen to it on our previous session last Sunday. The second part of the farman was, if a human does the ibadat and dies but does not receive the salvation, then what is the use? He will never be. If his intellect, if he's smart, if he's one with the ilm, he will never be happy with less. Remember the word Mala Baba used? Meritocracy. Mediocracy में वो कभी भी खुश नहीं होगा. Meritocracy. यहाँ पर मौला क्या समझा रहे हैं हमको इस फरमान से? देखें, if you give me permission, let me be blunt. आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा खुलकर बात करना चाहूंगा. अगर आप मुझे इजाजत देते हैं और मुझ पर नाराज नहीं होते हैं तो. मौला बाबा हमको बोलते हैं
कि देखो आप जमात खाने आते हो, दुआ पढ़ते हो, इबादत करते हो, इसमें आज़म भी लेते हो, इबादत भी करते हो, लेकिन कभी भी कामयाब नहीं होते हो। तो ये क्या बात हुई? फिर आप समझते हो और आपकी ये दिल में ख्वाहिश होती है कि हम मर जाएंगे तो मेरे भाई बहन, मेरे रिश्तेदार, मेरे मुखी साहब, मेरी जमात मेरी दुआ करेंगी, तो मौला बाबा उसकी सिफारिश से मुझे असल में वासल करेंगे। ये क्या बात हुई? माफी के साथ मैं ये कह रहा हूं आपको, आपकी इजाजत से मैं आपको समझा रहा हूं। लेट मी एक्सप्लेन दिस अगेन विथ योर परमिशन। आई एम गोइंग टू बी ब्लंट, प्लीज don't be mad at me. With your permission, we as an Ismaili, as the follower of the Imam, we go to Jamaat Khana, we give the son, we do our 3-time dua, we do our bandagi, ibadat, and then die. And then we wish that our family, our friends, our Jamaat, our Mukhi Sahib will pray for us, and then Mullah Baba will listen to their prayers. Because look at what we are. We are always worried about the Rohani. We are never worried about our soul. What is the reason? Out of the 100 questions I receive every week, 97 questions are about the Rohani and only 3 about our soul. What is the reason for that? Because our mindset is wired very funny. हमारा जो दिमाग है ना वो अजीब गरीब तरीके से हमने सेट किया हुआ है कि बस 2-3 साइड दो पढ़ लो, बस तसम डाल दो, बस थोड़ी बहुत जो इबादत करनी है कर लो, इसमें आदम ले लो, सुबह को 4 बजे इबादत करने चले जाओ, फिर मौला मालिक है, सही है ना, अरे मर जाएंगे तो मेरे भाई बहन पीछे है ना, मेरे लिए दुआ करेंगे, मेरी जमात मेरे लिए दुआ करेंगी, मुखी साहब मेरे लिए दुआ करेंगे, मौला मुझे असल में वासल कर लेंगे। 97 out of 100 question I receive every week वो रूहानी के लिए है। अरे भाई मेरे रूह का क्या होगा? How come we don't think of our soul? कल हमने फरमान पढ़ा था ना, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कोई भी रूहानी बच्चा इस दुनिया से गुनहगार होके गुजर जाए। We heard this फरमान yesterday. Mullah said, I do not want any of my murid to die sinful. Remember that? यहाँ पर जो फरमान है इसके अंदर यही बात हो रही है। The very फरमान in front of you. Then if you come to Jamasana, if you do ibadat, but if you do not receive the salvation, then what is the use? If you are one with the intellect, if you are one with the ilm, if you understand your tariqah, you will never be happy with that. That is Mullah's saying. So how do we do that? Again, the Farman, remember above, ilm, ilm, ilm. इल्म वाली रूह दर्जा ब दर्जा ऊपर जाती है। हकीकी इल्म, true knowledge, true knowledge, true knowledge. Knowledge will take you to salvation along with ibadat, bandagi. I'm not going to explain again the meaning of ibadat and bandagi because I have explained that not one time but 100 times on this channel. What does ibadat bandagi mean? If you follow the Imam the way you're supposed to follow Imam, then with the true knowledge, you will. I'm not saying maybe. मैं कहता हूं कि अगर आपके पास हकीकी इल्म है और फिर अगर आप इमाम की फरमान बरदारी करते हैं और इबादत करते हैं और दस्तम डालते हैं और दुआ पढ़ते हैं और तस्बीह करते हैं और गिरादारी करते हैं और जमात जाते हैं, तो
तो शायद नहीं, यकीनन 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 आपको निजात मिलेंगी। मैं नहीं कहता हूं, ये मौला का वादा है, ये मौला का फरमान है। That's his फरमान, that is his promise. It is not me. Who am I? Nobody, nothing. This is Imam's फरमान, Imam's word. I believe in his फरमान. That's why we are saying again and again, ilm, ilm, ilm. Hakiki ilm, hakiki ilm, hakiki ilm. True ilm of the Imam will guarantee you the salvation. The words of the Imam, the Farman of the Imam. Believe, believe, believe. Follow, follow, follow. Acha, let's come to same line of Farman on this. For a moment, the world is but a prison. When a moment departs from the world, he gets released from this prison and enter into the garden, and no one should feel sad for him. Imam Sultan Muhammad Shah says. So two-parted Farman. There are two sides of this Farman. In one side, Imam says, in very Farman, that this world is like a prison because this body is a prison for our soul. And if we die and do not receive the salvation, then we are in a bigger prison. But if you have done what Imam had asked you to do, then you will find this salvation, and therefore no one should be sad for the departed. No one should be sad for the departed. You know, हमारे तरीके में हमको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं। जब हमारे कोई रिश्ता गुजर जाता है तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम कहते हैं कि वो इमाम से आया था और इमाम की तरफ चला जाएगा। इमाम फरमाते हैं कि मरने का दिन ईद का दिन है, खुशी का दिन है। So why be sad? Why be sad? अगर हमने अपना पाठ किया है तो हम इंशाल्लाह इमाम की तरफ लौट जा रहे हैं। और कौन दुख करता है, बल्कि हमको मुबारकबाद देनी चाहिए कि आज आपको इमाम का दीदार है, आज आप इमाम के पास जा रहे हैं। आज अगर आपको कोई फोन करे, आपका भाई बहन, कि मौला पापा is calling me, I'm going to Eglamont, would you be sad or happy for him? Of course you will be happy for him, right? So why are we sad when someone dies? Because he and she has received the closeness of the Imam and the didar of the Imam. We should be happy for our departed friend, family, Jamaat. That is the Farman. Try, practice it. Inshallah, if you believe, remember, number one, first level, believe. If you believe, you will not be sad. All right. Okay, there's a second part of this question, and there is a third part of question. I know all of you has a lot of question, and we are always running short of time, and sometimes we are not able to cover all your question in one session. For that, my apology. आपके बहुत सारे सवाल है, कभी कभार हम टाइम खत्म हो जाने की वजह से सब सवालात के जवाब नहीं दे सकते हैं, लेकिन I promise we will come back and we will answer every one of your question. There will be no question we will not answer. Second part of this question is, and my sister is asking, what is the reason, क्या वजह है कि हम जब भी हिस्ट्री के अंदर देखते हैं कि तमाम जो आला दर्जे पर मोमिनीन पहुंचे हैं वो मर्द हजरात हैं? What is the reason
that when we read and listen to the history, we see all the male are on the higher rank. That is not true. My sister, that is not true. Don't forget Bibi Fatima. Don't forget Bibi Khatija. Don't forget Maryam. Don't forget Hawa. Don't forget Zulekha. Don't forget Rabia Basri. Don't forget Imam Shah Begum. And there are many, many, many. And even in today's time, I'm not talking about the past now, there are more women that I know personally. They are on higher ranks than us Garib male. Men are not the only one. Imam's eyes, we are all same. इमाम की नजर में मर्द औरत सब बराबर बराबर है. You want a proof of that? I'll leave you with the 2 ayat. I'll let you research and read. Surah Tahrim 66. Surah ayat number 8. Read the very first word. Male and female. Surah Hadith, Surah number 57, ayat number 12. Read the first word, the male and the female. That will tell you that male and female in the eyes of the Imam are same. We are all spiritual children of the Imam, regardless of gender. कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम आदमी है कि औरत है, इमाम की नजर में हम सब ठीक है, सब एक है. आप इन दोनों आयतों के अंदर जाकर उसके पहले अल्फाज को पढ़ लें कि वहां पर मर्द और औरत की बात हुई है या खाली मर्द की बात हुई है. Question part number 3 from same person. Very beautiful question. A Ginan from Pir Hassan Kabiruddin. एक ने मारे, एक ने तारे, एक ने अली वारे. क्या मतलब है इस गिनान का? How do we understand this? गिनान में बोला फिर फरमाते हैं एक ने मारे. पहले फिजिक यानी कि जो लिटरल वर्ड है वो अजीब और गरीब है और कभी कभार हम अल्फाजों के अंदर फंस जाते हैं और नहीं समझ पाते हैं. Thank you for asking. This is a very beautiful way of understanding our Kinan. एक ने मारे sound like punishment. एक ने तारे sound like salvation. एक ने अली वारे sound like blessing. Correct? Let's understand this one now. The very first one. एक ने मारे. यहाँ पर मूतू कबला अंत मूतू का जिक्र है. In the very first sentence, एक ने मारे is not about punishment. It's about mutu kabla anta mutu, die before you die. So Imam is talking about 3 kind of mu'mineen. And the first one is the best one. Look at it. Our mind is thinking of punishment. But the Pir is telling us the first one is the one that Imam had taken this moment through the mutu kabla anta mutu, the die before you die stage, into the salvation. आपने देखा आपका नजरिया, your view must have changed. If this was this easy to understand Ginan, तो फिर हमको क्या चाहता था? The first one, Pir is talking about there are 3 kind of mu'mineen. First one, the one who goes through mutu kablantu mutu, salvation during this lifetime. मारे के वर्ड के अंदर
वो मौत का जिक्र है जो मरने से पहले थी। सेकंड वन, एक ने तारे, those mu'minin who try very hard, for whatever reason, if they do not make it, Imam will उसको तार लेगा मौला। Because why? उसने मेहनत की, honestly मेहनत की। So Imam will accept his hard work, hardship, ibadat, bandagi, and give him the salvation. Third one, those poor like me, गरीब like me, जो मेरे जैसे गरीब है ना, आखिर में मौला उस पर भी मेहरबानी करेगा और उसको भी तार लेगा। So Mullah is talking about three kind of mu'minin here. एक ने मारे, एक ने तारे, एक ने अली वारे. Pir is teaching us about these three kind of mu'minin. Inshallah, all of us, all of us, all of us. Imam's mercy is on us. Imam loves us. Imam loves us very much. Believe in him. He will not let you go. He will hold your hand and he will take you to the salvation. I'm going to just take one last question and then we will finish this session, because next one is a old Farman and a long Farman to read and understand. Inshallah, we will start with it next week. So next question is two-parted, and this question was asked few weeks before, and I believe maybe I was not thorough in my answer. Inshallah, we will try again, no problem. Consciousness and free will. Two-parted question hai. As we are with a free will and with a conscience in this world, अगर हम इस दुनिया में अपने शऊर और अपने फ्री विल के साथ हैं, तो हम हर काम जो करते हैं वो अपनी फ्री विल से करते हैं। कभी कभार हमको ऐसा लगता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये तो कारमा है, ये तो मौला की मर्जी थी, ये तो मेरे किस्मत में लिखा हुआ था, ये तो वो। तो एक शख्स मौला के पास आता है, मौला अली के पास आता है, मौला अली मुर्तजा के पास आता है और कहता है कि या मौला, मेरी फ्री विल कितनी है और खुदा की मर्जी कितनी है? Can you explain to me? A man comes to Ali Murtaza and asks, how much free will do I have? And how much, what is written in my luck? Mullah says, raise your feet, your first feet. अपना एक पांव ऊपर उठाओ। वो अपना एक पांव उठाता है। मुल्ला फरमाता है अपना दूसरा पांव ऊपर उठाओ। वो बोलता है मैं नहीं उठाऊंगा, मैं गिर पड़ूंगा। मुल्ला ने कहा ये आपकी फ्री विल थी, फर्स्ट वाले आपकी किस्मत थी। You see, what is written, what is our luck, what is our karma, and what is our free will goes hand in hand. There is so much which Imam has destined for us, and he has given us free will to either follow that or change that. What did I say? Follow that or change that. Okay, listen to this event. A man came to Imam and said, how much is my free will and how much was destined? What was written for me? When Imam said, raise your own feet, he raised. He said, raise your second feet. The man said, no, I will fall down. Imam said, one was your destiny, one is your free will. Hand in hand. साथ साथ चलते हैं ये, साथ साथ चलते हैं ये। कुछ खुदा ने हमारे लिए सोचा है, कुछ हम अपने लिए सोचते हैं। हम जो अपने लिए सोचते हैं उसको हम बदल सकते हैं। We can change.
हमको अच्छा करना है, हमको बुरा करना है, वी कैन चेंज। हमको बैठना है, हमको खड़ा होना है, वी कैन चेंज। हमको जाना है, नहीं जाना है, वी कैन चेंज। व्हाट कैन वी नॉट चेंज? when we will be born, when we will die, we cannot change that। हम खड़े रहते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसको हम बदल सकते हैं, वो हमारी फ्री विल में है। हमको काम करना है, हमको भूखा रहना है, हमको ये करना है, हमको वो करना है, ये हम बदल सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। क्या नहीं बदल सकते हैं? हमारी जिंदगी कब पैदा होगे, कब मरेंगे, ये खुदा के हाथ में है। वो भी खुदा के हाथ में है। मेहनत करना हमारे हाथ में है। आपने देखा, ये साथ साथ में चलता है, ये साथ साथ में चलता है। आप नाचीज के पिछले सेशन को दोबारा सुने और आज के इस एक्सप्लेनेशन को आपके सामने रखें कि खाली किस्मत पर भरोसा नहीं करें, कुछ मेहनत भी करें, और मेहनत करने के बाद खुदा पर, इमाम पर ईमान लाए, यकीन करें, इमाम सब अच्छा करेगा। पहले मेहनत करें अपनी फ्री विल से, अच्छा काम करें, इबादत बंदगी करें फ्री विल से, और फिर इमाम के ऊपर छोड़ दें। That is your destination. That was destined for you. इमाम आपके लिए अच्छा सोचता है, पहले मेहनत और फिर इमाम पर छोड़ दें, दोनों साथ साथ में चल रहे हैं। So thank you very much. I will stop here. We have about 3 minutes. If there is any short question, ask. Otherwise, remember, we have another program at 10 o'clock in about 30 minutes. Subhanallah, sir, Subhanallah. Friends, if you have any question, please share in this chat room. So, friends is asking if you can. Aziz, I have one question. Please explain the ek ne mare in short. एक ने मारे, अभी नाचीज ने जो एक्सप्लेन किया कि एक ने मारे ना मतलब छे कि एक ने मोला आ जिंदगी में मूतू कबला अंत मूतू, यानी कि आ जिंदगी में એને મારી, यानी कि એની રૂહ નીકાળી ને એને દેખાડશે ताकि ई જોવે કે કેવી રીતે ई મોલાના અંદર એક થઈ શકે છે। एक को मारे का मतलब है कि वो एक मोमिन को मूतू कबला अंता मूतू के स्टेज से गुजार कर उसको दिखाता है कि किस तरह से वो इमाम में एक हो सकता है। जी कमरे से। I have one question, quick one, Aziz Ba. You know, when you said ke hakikat ilm gives salvation. So હવે મોલા બાપા તો ઇલમ કેટલા બધા કર્યા છે, સિલ્વર jubilee, golden jubilee, diamond jubilee. So which are the ilm that gives you salvation, you know, certain farmans? Is there something like that? Okay, so 3 things. All farman, not which is convenient for us, all the farman, all the ginans, and all the ilm. 3 things. Yeah. Because without the ilm, you cannot understand ginan. Without the ginan, you cannot understand the farman. So all 3 goes together. ખીચડી બનાવવા માટે આપણને ચોખા भी જોઈએ, દાળ भी જોઈએ, પાણી भी જોઈએ, બધું જોઈએ ને, all together. Farman teaches us how to understand Ginan and the ilm. Ilm teaches us how to understand Ginan and Farman. See, all this is compulsory for each other. Inshallah, we are not too far. You are already here. You are already learning. You are already understanding the Farman. You already understand the Ginan. Inshallah, as we learn more and more, pay attention, ponder on it more and more, we will get to salvation. Believe in Imam,
I am certain that all of us, inshallah, are in the rahmat, in the mercy, in the khanawadan, in the duashish of the Imam. Imam's hand is on your shoulder. Believe it. Don't worry. We are good. Thank you, everybody. We'll see you in about 30 minutes. Ya Ali Madad, Ya Ali Madad. Madad. Ya Ali Madad, Ya Ali Madad, Ya Ali Madad, Thank you. Ya Ali Madad. Thank you. Yali Madad. God bless you. Bye. Yali Madad and thank you. Bye.